Hello friends, today's topic is inflammation. First of all, we will study about the definition of the inflammation. So how will you define it? It is defined as an local response of a living tissue. It is a local response of living tissue to any injury by any injurious agent. So अगर आपके कहीं पे लगती है तो उसे हम इंजरी मानेंगे, तो उसके इंजीरियस एजेंट्स की वजह से लगेगी, तो उसके टाइप्स भी होंगे कि हमें कैसे लग सकती है। इंजीरियस एजेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले की हम बात करेंगे इन्फेक्टिव, जिसके हमारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स आते हैं, ये सारे हमारे इन्फेक्टिव हैं। फिर हम फिज़िकल की बात करेंगे। फिज़िकल के अंदर कौन कौन से आते हैं जो फिज़िकली प्रेजेंट हो, जैसे एसिड, हीट, कोल्ड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे केमिकल। केमिकल के अंदर हमारे आते हैं एसिड एंड बेस। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द टिश्यू नेक्रोसिस, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। बाय दी इस्चीमिया, स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से जो टिश्यू डेथ होती है, उसके अंदर भी इंजरी तो हो ही रही है हमें। ओके, नाउ विल देन वी हैव इम्यूनोलॉजिकल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसके अंदर जो इंजरी होती है। देन वी हैव इनर्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल the gases. Okay, now we'll learn about the signs of inflammation. How will we know that we have got an inflammation? First is rubor, that is redness. Then it is tumor, that is swelling. Then it is calor, that is heat. And then it is delor. Okay, now all these three results into the loss of function of a tissue. So उसे हम कैसे बोलेंगे? It was given by साइंटिस्ट, सो हम ग्रीक में बोलते हैं उसे भी। ओके, नाउ द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, देर आर टू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो हम बेसिस ऑफ पे करेंगे कि ड्यूरेशन कितना है उस इन्फॉर्मेशन का। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड फिल्ड इन द इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड फिल्ड है, किस टाइप का फ्लूइड फिल्ड है। सो उसके बाद ड्यूरेशन की अगर बात करें तो वी हैव अक्यूट इन्फॉर्मेशन एंड क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। ओके, अक्यूट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? अक्यूट से पता लग रहा है ना, एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट दी फ्लूइड। कौन कौन से फ्लूइड हो सकते हैं? सबसे पहले है हमारे पास सीरस, इसके अंदर क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। ओके, देन वी हैव आर फिब्रस फ्लूइड, उसके अंदर थ्रेड लाइक आपको दिखेंगे, थ्रेड लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा उसका, स्ट्रिंगी फ्लूइड बोलते हैं हम इसे। ओके, नाउ वी हैव प्लूरेंट फ्लूइड, दैट इज पस फिल्ड। ओके, नाउ फर्स्ट वी लर्न अबाउट अक्यूट इन्फॉर्मेशन। अक्यूट इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्फॉर्मेशन जो हमारा होता है, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ सडन इन ऑनसेट, कि मतलब अचानक से ही होगा। क्रॉनिक तो उसके अंदर डिलेड आएगा, पर हम अक्यूट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, सडन इन ऑनसेट हो गया। और मेन इसके अंदर जो सेल मीडिएटर्स होते हैं, दैट आर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स। फर्स्ट इज आर न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड इज आर इओसिनोफिल्स। देन वी हैव लिम्फो मोनोन्यूक्लियर, okay, lymphomononuclear cells, these are late. Okay, then we have pus cells. Okay, these are the main cell mediators of acute inflammation. Now we'll talk about what happens in acute inflammation. First is plasma exudation is present, means plasma flows into the interstitial fluid, interstitial space. Okay, then we have the main morphological features, that is first abscess. They can be an abscess, they can be ulcer, it can become septicemia. Okay, these are the three types morphological changes we can see in severe, okay, or pyemia. Okay, now this repair is present, but in chronic their repair may be present. Okay, and over here also it can be progressive to chronic. Okay, for example, we'll take an example of it. First is our cellularitis.
or a bacterial pneumonia. These are they turn into chronic. Okay. Events in acute inflammation, there are two events. इवेंट्स के अंदर क्या मानते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होंगी अक्यूट इन्फ्लामेशन के टाइम पे और किससे मीडिएट होंगी? सबसे पहली होगी एक वेस्कुलर इवेंट्स, कि वेसल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारी, और होगा दूसरा सेलुलर इवेंट्स, कि हमारे जो सेल्स हैं वो क्या क्या काम करेंगे अक्यूट इन्फ्लामेशन के टाइम पे। अब हम वेस्कुलर इवेंट्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है हीमोडायनेमिक इवेंट्स। हीमोडायनेमिक इवेंट्स का मतलब ब्लड फ्लो के अंदर क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं हमारे। सबसे पहला ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगा, इट इज़ अ रिफ्लेक्स। ओके, इट इज़ द फर्स्ट इवेंट एंड इट इज़ it is of short duration and it is a reflex. Then there will be vasodilatation. Okay, first we have got vasoconstriction, then then the vessel will get vasodilated. There is increased blood flow, due to which there is heat generation. Okay, rubor is there, redness is also there, calor, heat is also there. Okay, and it is mediated by histamine and serotonin. Okay, histamine and serotonin. There is increase in vasculature permeability. Okay, this is our third point. Okay, there is increase in vascular permeability. It is maximum in venules, so it does not affect our arteries or veins, it affects the venules. That over there is high permeability of the vascular endothelium, means more of plasma can escape out. It is due to the local hydrostatic pressure increase. Then there is stasis, as there is low amount of plasma into the blood vessel, तो क्या होता है वहाँ पे जो ब्लड की स्पीड है वो धीरे हो जाती है, तो उसे हम स्टैसिस बोलते हैं। और क्यों होती है? क्योंकि कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है आरबीसी का, सो इट बिकम्स अ डेंस फ्लूइड। डेंस फ्लूइड धीरे फ्लो करता है, उसे हम स्टैटिस बोलते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। हमारी जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी की हमने बात करी थी, वो इंक्रीज़ कैसे होती है, मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द वेसल्स। ओके, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या रिट्रैक्ट हो जाए। पहले हम मानते थे कि ये दोनों अलग है, बट नाउ according to Robbins it is almost the same, contraction and retraction. It is the most common type of mechanism that affects the venules. Okay, then we have capillaries and arteries, and arterioles are not affected. Okay, they remain unchanged, unaffected by this so-called retraction contraction of endothelium does not occur in capillaries and arteriole. It is a very important type of you can say MCQ. Okay, it creates a temporary gap between the cells. अगर दो cells कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आसपास के, तो साइड में उनके गैप्स बन जाएंगे, तो वो टेम्परेरी होते हैं। लेकिन अगेन रिट्रैक्ट हो जाए, नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, वो हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स होता है इमीडिएटली बिगिन हो जाता है आफ्टर इंजरी, and it is of short duration. Okay, it is of short duration of around 15 to 30 minutes.